Hi everyone, welcome to Super Kalam. I am your teacher and mentor Arpita Sharma. This session is going to be really important for all of you. If you haven't still analyzed previous year questions, or if you haven't gone through the prelims 2025 question paper, then also this session is going to be relevant. If you have analyzed the prelims 2025 paper or you have gone through the PYQs, then also this session is going to be extremely relevant for you, because we are going to discuss something which you might not have explored so far in prelims. In the coming days, I'm going to explore subject wise sources, importance, toughness level, analytical level of how questions are getting formed in prelims examination. Today, we are starting with history, and in history, we encapsulate आर्ट एंड कल्चर, medieval, modern, ancient. ये सब हम एक में ही कवर करेंगे एक ही सेशन में. But I'm going to discuss something really important in this class. What is it that I'm going to discuss in this class? First important aspect is that this time UPSC focused on previous year questions when it comes to history. Questions were repeated. History was on the easier side in prelims this year. Questions repeat हुए हैं. We can't deny the fact. We are going to go through the question paper also. We are going to understand the toughness level, not just that, the sources from where questions came. थोड़ा टाइम लगता है ना प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को देखकर एनालाइज करने में. तब जाकर समझ आता है कि सोर्सेस क्या रहे होंगे. आर दे फ्रॉम एनसीईआरटी, आर दे फ्रॉम द पीवाईक्यूज, आर दे फ्रॉम स्पेक्ट्रम एटसेट्रा. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स नेक्स्ट. अब क्या करना है हमको, बिकॉज सी, if you're preparing for UPSC 2026 or UPSC 2027, you should know the steps. We learn from the past is for learning. So what can we learn from this year's prelims paper, especially in history? We are going to delve deeper into that. Okay, let's get started everyone. शुरू करें आज का सेशन. Everybody please take out your registers. एक बार रजिस्टर निकाल लो हिस्ट्री का. I have the question paper with me. मेरे साथ हमारा जो इस साल का क्वेश्चन पेपर है वो भी है. तो क्वेश्चन पेपर को रेफर करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस दिस ईयर. व्हाट वर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री? तो यहाँ पर first let us understand the sources. The first important source that I noticed was the Spectrum publication book of modern history. Modern history की Spectrum publication की जो किताब है, that is of utmost importance. Proof हो गया इस बार. Even if you have the old version, it's okay. Okay, then next is that we need to cover class 11th हिस्ट्री. आपकी जो एंशंट हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की किताब है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दी एनसीईआरटीज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर्षास पीरियड और ये सारे चैप्टर्स हम स्किप कर देते हैं. स्किप नहीं करना है, राइट? एंड नेक्स्ट is PYQs. These are the three sources which UPSC has used when it comes to history. Heavy focus was on PYQs. कम से कम 12 क्वेश्चन तो PYQs से ही निकल के आ जाते हैं, राइट? तो PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन PYQs. आई शो यू विद एन एग्जाम्पल. मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी वाई एम आई सेइंग इट. ओके, तो वी हैव अंडरस्टूड फर्स्ट दी सोर्सेज. सबसे पहले हमने सोर्सेज समझ लिए. नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. If PYQs were asked, what were the PYQs? What were the years from which questions have been repeated? Now look at this particular question. Direct PYQ from 2016, Argahatta. 2016 सबसे पहले लिख लो, please write it down. 2016's PYQ was asked. In 2016, this question was asked. Question is, with reference to the economic history of medieval India, the term Argahatta refers to bonded labor, land grants made to military officers, water wheel used in the irrigation of land, wasteland converted to cultivated land. NCERT based question asked in UPSC, became a PYQ, repeatedly asked in 2025 now. डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जस्ट दी ऑप्शंस चेंज्ड. यहाँ देखोगे, इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अर्गाहट्टा, वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes, larger earthen pot driven by bullocks, large water bucket pulled up by rope directly by hand. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं. हियर दे आर गिविंग यू डायरेक्ट हिंट दैट इट इज एन इरिगेशन डिवाइस. यहाँ पर हिंट नहीं मिल रहा था. दिस इज एन एनसीईआरटी क्लास 11th मिडिवल हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो पढ़नी ही पढ़नी है. यू हैव टू स्टडी इट. ओके, छोड़ना नहीं है उसको.
Questions are getting asked and questions are getting repeated also. Repeat भी हो रहे हैं questions. So we can't skip that, right? Correct answer here was B. यहाँ पर correct answer था C. Okay. Now see, even the option is kind of similar. Options भी kind of similar हैं. So whenever we are studying any PYQ, make sure you are studying the options also. So first PYQ we have noticed 2016 का use हुआ है. Coming on to the second PYQ. Okay. Look at this particular question. Now, this question was not just asked in prelims earlier. It is from class 6th NCRT. 6th class की NCRT से, not just class 6, even class 11th NCRT. So, in modern history, I recommend students to cover class 11 to class 12th NCRT. अगर आपने इन क्लासेस की एनसीईआरटी की है 6 से 12th स्किप करो चलेगा, 11 12 स्किप नहीं करना. 6 से 10th यू कैन स्किप, 11 12th यू कैन नॉट स्किप. UPSC has been following a pattern continuously, focusing on foreign travelers, focusing on books written by different travelers, different kings in whose kingdom, in whose time period these travelers came to India and traveled. So Farhain के ऊपर question पहले भी पूछा गया है. Again, direct question was asked, and this question was even asked in 69th BPSC paper. आजकल whenever we look at CAPF और CDS और BPSC paper, type of questions kind of same हो रहे हैं, pattern of questions kind of same हो रहे हैं. Fine, Chinese pilgrim traveled to India during the reign of Chandragupta II. Direct question था, free के 2 marks थे. If you have studied your medieval history NCERT, nobody can take away these 2 marks from you. ये 2 number कोई छीन ही नहीं सकता आपसे. Okay. So far what we have realized, हमारी learnings क्या हैं? Always remember, I'll just create a separate slide and share with you. Always remember, whenever you are solving previous year questions, so we are running a focus batch, and so far we have launched a lot of focus batch. Students have benefited from those batches. Students have cleared prelims after coming into the focus batch. The point is, what are we doing in it? It is not just a traditional coaching. It is a batch where an ecosystem of discipline and consistency is built, where we teach students how to learn from PYQs, how to learn from NCRTs. हमारी learnings क्या रहनी चाहिए? Our learnings should always be that UPSC's mindset is very important to understand. If you understand how UPSC thinks, it becomes 670% UPSC का जो स्ट्रेस है ना वो आपके दिमाग से निकल जाता है, ईजी हो जाता है UPSC के माइंडसेट को समझना अगर आप PYQ उसको समझ जाते हो. How you can understand that? Through previous year questions. You are studying about Chinese travelers, you are studying about, let's say, revolts, but if you do not practice PYQs, you will not understand how UPSC looks at these topics. As a student तो हमें लगेगा हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बट यूपीएससी उस चैप्टर को कैसे देखता है वो कैसे समझ आएगा? पीवाईक्यूज के थ्रू समझ आएगा. एंड फॉर दैट यू हैव सुपर कलाम. यू गो टू सुपर कलाम and I'll show you something very important. In our focus batch now, all the classes are covered, all the modules are covered. So in ancient history you will see, आप यहाँ देखोगे, in ancient history we take classes in mind map format. Then the complete module is shared with the student, बट उसके साथ साथ क्लासेस भी होती हैं, माइंड मैप्स भी होते हैं, सो दैट यू कैन बी हेल्प्ड ड्यूरिंग रिवीजन. यही माइंड मैप्स रिवीजन के टाइम पर हेल्प करते हैं. सिमिलरली फॉर हरप्पन सिविलाइजेशन यू सी द एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री इज टेकन अप बाय मी. तो यहाँ पर भी आप देखोगे इन द बैच यू विल सी दैट इन माइंड मैप फॉर्मेट वी आर कवरिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड यू हैव प्रैक्टिस PYQ टूल्स ओवर हियर. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री. जितने PYQs प्रैक्टिस करने हैं करो. फॉर एग्जाम्पल 2025, ठीक है, इसको करते हैं 2025 सेलेक्ट. हिस्ट्री में वी विल कवर एंशिएंट हिस्ट्री, देन वील कवर मॉडर्न. चलो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते हैं, ठीक है. टॉपिक आपको जिस टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है कर सकते हो. क्लिक ऑन स्टार्ट प्रैक्टिस एंड यू विल सी हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री. 8 क्वेश्चंस केम फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है. 8 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. यहाँ पर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो. ऑल द सोल्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन. यहाँ पर पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज द ब्यूटी. देन यू कैन लुक एट योर एक्यूरेसी परसेंटेज. प्लस अब तो सुपर कलाम का ऐप मोबाइल पर भी आ गया है. सो यू कैन स्कैन दिस QR कोड, डाउनलोड सुपर कलाम्स ऐप ऑन योर एंड्रॉइड मोबाइल फोन and start your preparation. But understanding UPSC's mindset is very important. When it comes to mindset, PYQs are the key. Second important thing is, do not run after different books. Basic NCRTs are enough if you revise them multiple times. अगर आप उसको multiple times revise कर रहे हो, ये काफ़ी है. In NCRTs, class 11 to 12th NCRTs are your brahmastra. They are your weapons.
इसको कम से कम 3 बार रिवाइज कर लो. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन मी. If you solve the PYQs of history this year also, you will understand the difference. यही काफी है. This is relevant. This plus PYQs plus multiple revision, that's it. इतना ही करना है आपको. ठीक है, चलो. Now let's move on to the next question. Next question पे आते हैं. Yes, this year there were 4 marker question asked from non-cooperation movement alone. दोनों ही easy थे question. 4 marker means 2 questions were asked. But these 2 questions again were taken from PYQs. Consider the following subjects with regard to non-cooperation movement. Understand the question first. पहले question समझो. Boycott of law courts and foreign cloth, observance of strict non-violence, retention of titles and honors without using them in public, establishment of panchayats for settling disputes. Retention of title, no, non-cooperation है. People gave up their titles and degrees and honors, right? तो ये तो हो ही नहीं सकता. रिटेंशन तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, समझ आया? We studied this in non-cooperation movement, that when non-cooperation movement was launched, that meant we are not cooperating with the government, British government. Many people, as a symbol of non-cooperation, gave up their titles, gave up their honors, their degrees, to show that we are not going to cooperate with you. This is how whatever you have learned should be applied. And ये तभी आएगा जब PYQ solve करोगे, जितने ज़्यादा questions practice करोगे. Similarly, you will see that in previous year question paper, a question was asked. Swadeshi and boycott were adopted as methods of struggle for the first time during the agitation against partition of Bengal. Home rule movement, non-cooperation movement, visit of Simon Commission. Here there is a catch. How to prepare PYQs? Whenever you are solving PYQs, you do not just remember the correct solution, you study each and every option. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है पढ़ो, होम रूल मूवमेंट क्या है पढ़ो, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ना है, साइमन कमीशन पढ़ना है. Because next year you never know, question on only partition of Bengal will be asked, question on only Simon Commission can be asked, होम रूल मूवमेंट पे सिर्फ क्वेश्चन आ जाएगा, which has been asked in reality. This is how you prepare through PYQs. ऐसे प्रिपेयर करते हैं. ये बेसिक चीज बच्चे आउट ऑफ लेथार्जी स्किप कर देते हैं. बट नाउ दैट यू हैव PYQ टूल ऑन सुपर कलाम विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नाउ यू कैन नॉट स्किप. अब तो टॉपिक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सिलेक्ट किया, राइट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. 3 क्वेश्चंस देखो, 3 क्वेश्चंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट के आसपास आ गए क्वेश्चंस आपके. ठीक है. Who provided legal defense to the people arrested in aftermath of चौरी चौरा इंसिडेंट? स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी है. दिस इज इजी. सो सुपर कलाम ऑल्सो टेल्स यू इफ द क्वेश्चन इज टफ और इजी, राइट? क्वेश्चन टफ है या इजी. अब ये वाला क्वेश्चन मीडियम था बिकॉज इट वॉज फर्दर आस्किंग इन डिटेल अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो मीडियम था ये क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज हाउ यू मूव अहेड. अब देखो आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आज पढ़ा, यू स्टडीड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुडे. You go to Super Kalam, click on practice PYQs. अब तो ऐप पे भी PYQs practice कर सकते हो. Okay, once you practice PYQs, in the PYQs select the topic non cooperation movement, select the number of years. For example, यहाँ देखते हैं select all. So far from 2011 till 2024, how many questions on just non cooperation movement have been asked, and you can practice them. Practice करो. ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ना है. This is how you have to move ahead. Whatever PYQs have been asked this year also, whatever questions came in history, make sure that you are understanding how a particular topic is picked up and questions are framed. बस आपको ये समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेम कैसे की जाती है, कितना घुमाया जाता है क्वेश्चन को, how questions are made tricky, the topics that are easy, inflation easy topic है, उसको कैसे ट्रिकी तरीके से पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी का PYQ ही बताएगा आपको, और कोई नहीं बताएगा. I always show this to all our students even in the focus batch. So ये important slide बहुत important है कि कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है. Always focus on building your conceptual clarity first. NCERT से शुरू करना है, उसको PYQs के साथ क्लब करना है, and PYQs have to be studied in a strategic manner, topic wise and subject wise. Today you are studying modern history. In modern history you are studying Gandhian movements. Gandhian movements में topics निकालो, which were the movements, practice PYQs after studying them. This is how you do your revision simultaneously. syllabus complete होने का wait मत करना. Do not wait for syllabus completion. Simultaneous revision should be going hand in hand. ये होना ही चाहिए. This is a must.
so that by the time you reach September, you will become really confident in your approach, really confident in your preparation. So let's just go through the PYQs one by one. For example, this particular question on Raja Ram Mohan Roy, again, if you are studying spectrum, अगर आप modern history की spectrum पढ़ रहे हो, ये question important है. Plus, in our revision class also we have covered this particular question. Consider the following statements about Raja Ram Mohan Roy. He possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East, which is correct. He was interested in Vedic philosophies, etc. Then he desired his countrymen to accept rational and scientific thinking. ये बहुत important है. This is absolutely correct. Yes, rational and scientific approach. He always used to say कि do not just blindly follow anything. Always question things. So correct answer यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? It would be C. C would be the correct answer in this case. Now look at the question carefully. Is the question tricky? The question is direct, but the question is a bit, you can say घुमाया हुआ. Why? Because direct any organization that Raja Ram Mohan Roy formed, any book that he wrote, इस पे question नहीं है. Question is not on that. It is just about the way of thinking of Raja Ram Mohan Roy. जब आप पढ़ते हो, you are reading in between the lines, then you will be able to solve this question. So here UPSC has given you another hint. Whenever you are studying about anything, any event, always remember, read between the lines, which means understand each and every line instead of just ratifying things. बस important author, important book, important movement, organization, founders याद नहीं करने हैं. आपको उसके साथ साथ चीजें समझनी है, how they thought, जो कि स्पेक्ट्रम में इट इज मेंशन्ड, ये मेंशन्ड है पूरा स्पेक्ट्रम में. So you have to understand before you ratify anything. रटना भी उतना ही जरूरी है. To some extent in some topics, cramming things is also important, but you have to add it with understanding, if you are able to understand it or not. Okay, this was one example. Then हमने अर्गहट्टा का एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी देखा, फाइन का भी क्वेश्चन सॉल्व किया. राइट नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Matta Vilasa, Vichitra Chitta, Gunna Bahara? Correct answer इस केस में क्या होगा? Question number 24. It is Mahendra Varman I. Correct answer is Mahendra Varman I. Now यहाँ पर अगर हम देखते हैं ना, he was a Pallava king. And always remember, whenever you study medieval history or ancient history, the important kings, important kingdoms, for example, ancient में Mahajanpadas are important. राइट. एनी साउथ इंडिया की हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, संगम एज का पीरियड पढ़ रहे हैं, पल्लवास, चोलास, चेरास, दे आर इंपॉर्टेंट. उनके किंग्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके कॉन्क्वेस्ट, उनके टाइटल्स आर इंपॉर्टेंट. दिस इज व्हाट यूपीएससी टीचेस अस. ये सिखाती है यूपीएससी कि जो पढ़ रहे हो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट यू आर स्टडिंग. ऑल राइट. So now you have to tell me, you have to go through, I have given the answer key also of this year's prelims 2025 in the comment section. You have to go through this year's PYQs in history only. सिर्फ history के art and culture के PYQs solve करने of prelims 2025. You have to share which type of question or which part of history, whether it is ancient, whether it is medieval, whether it is modern or it is art and culture, did you find a bit tough or tricky. ये मुझे बताओ. ठीक है, I'll be waiting for your answers. Okay, I read all the comments, so I will be waiting for your answer कि which part of history was a bit tricky for you. Thank you so much for being